ओके, जस्ट डू मी अ फेवर, मैं आपको ये लिंक दे देता हूँ यूट्यूब का। कोई एक बंदा जरा जाके बताना मुझे कि इट इज परफेक्टली स्ट्रीमिंग और नॉट। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम स्ट्रीमिंग। So live stream isn't available right now, आ रहा है. Isn't available right now. Yes sir. We have connection. YouTube is not streaming enough video to maintain smooth streaming. No, I can see now. मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है YouTube लाइव पे। Just check now. Is it coming now? No sir. No. Just a second. Okay. Anyways, मेरी तरफ से तो चल रहा है. We'll see. Okay, so yesterday we were discussing about how the air mass goes up and how it creates how it reaches to the dew point, and then how the dew point and other factors lead to rainfall. Correct? So there are three methods in total by which this air mass can get lifted so as to cause cooling and condensation of the atmospheric water vapor. Right? So what are those three methods? We discussed like one on that day. कौन सा मेथड डिस्कस किया था? Yes, someone? Orographic. Orographic, right? So orographic was the one which actually causes, if we talk about this Indian peninsular region, then this phenomenon causes most of the rainfall, right? So which are the barriers which cause this rainfall at the most? The major one is the Himalayas, which is responsible for most of the rain in the northern Indian region, maybe in the parts of Bhutan as well, if I'm right. All right. So let me share the screen. Okay, this is on. This is on. All right. So, so we'll start with the least one, which causes the least amount of precipitation actually. So that we call as convective precipitation. Convective precipitation, right? So what is convection actually? Convection actually आपको कब मिलता है? Convection का phenomena when we have some hot surfaces, right? And there is some radiation of the heat. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है. What happens that in a heavy summer season, this is your Earth's surface getting the energy from the sun. What will happen? This surface will get heated up, very very heavily heated up, right? So the air which is near to this surface will also be heated up. Obviously, some air will also be containing moisture, and then because it is so much heated up, it will try to move up, and when that will attain a sufficient altitude means the altitude which gives so lower a temperature which is good for
having a dew point. So as soon as it will attain that dew point, there will be condensation, there will be aggregation of the particles, the liquid droplets, and then that aggregation make the droplets grow bigger and bigger in size, and then under the effect of the gravity, the entire thing comes down in a form of heavy rainfall. Though they are short duration showers, but they are accompanied maybe by thunder or something. ठीक है, गर्मियों में आपने कभी कभी देखा होगा बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो जाती है locally. So this is a very localized phenomena. ठीक है, हो सकता है कोई 10 किलोमीटर के एरिया में हो जाता हो या 20 किलोमीटर के एरिया में हो जाता हो. ठीक है, बहुत बड़ा एरिया नहीं होता. इट्स अ लोकल फिनोमेना जहां पे ज्यादा हीट मिलती है, वहां पे ज्यादा एवापोरेशन होता है. ठीक है, एंड द कंडीशंस इफ आर सुटेबल for the dew point and the rainfall, the precipitation can occur. Right? So write down it is caused due to upward movement of the air. It is caused due to upward movement of the air, which is which is warmer than its surroundings, which is warmer than its surroundings. It occurs in tropical countries. It occurs in tropical countries where in a hot day where in a hot day the ground surface the ground surface gets heated unequally. The ground surface gets heated unequally, as a result of which as a result of which the warmer air lifts up the warmer air lifts up and colder air comes to take its place. comes to take its place. ठीक है, तो एक बड़ी जाहिर सी बात है कि जब भी वार्म एयर लिफ्ट करता है तो कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं हो जाता, हमेशा कोल्ड एयर आके उसकी जगह ले लेती है. एंड दिस फर्दर हेल्प्स इन द लिफ्टिंग ऑफ द एयर, क्योंकि नीचे की जगह ऑक्युपाइड हो जाती है जब भी वार्म एयर लिफ्ट करती है, तो उसको लिफ्ट करने में थोड़ा सा और आसानी हो जाती है. ठीक है, देयर इज अ ईज ऑफ लिफ्ट बिकॉज द कोल्डर एयर टेक्स द प्लेस ऑफ द वार्मर एयर. ठीक है, further right, the warm air continues to rise. The warm air continues to rise, undergoes cooling, and result in precipitation. And result in precipitation. All right. Depending upon moisture, thermal, and other conditions, depending upon moisture, thermal, and other conditions, light showers to thunderstorms can occur. Light showers to thunderstorms can occur.
The area covered is usually small. The area covered is usually small, maybe up to 10 kilometers in diameter. Maybe up to 10 kilometers in diameter. ये कोई hard and fast figure नहीं है. Generally, it is a localized phenomena. What you want to say? ठीक है? Then next we come to orographic precipitation. Orographic precipitation, right? So we have already discussed about this. So let's write down. These are responsible for most of the heavy rains in India. These are responsible for most of the heavy rains in India. The moist air mass strikes some natural topographic barrier. The moist air mass strikes some natural topographic barrier like mountains. Like mountains and cannot move forward so it rises up to cause condensation and precipitation. Just a second, I'll be back. Alright. So it rises up, which causes condensation and precipitation. The greatest amount of precipitation falls on the which side? इसको कौन सा साइड बोलते हैं? यहाँ से moisture laden wind आती है, ठीक है? Now it founds a barrier like mountain or something. Now it cannot go forward, so it has to rise up, right? Now if this mountain is high enough so that the air cannot cross it, तो क्या होगा? ये air ऊपर की तरफ जाएगी और precipitation इसी साइड पे वापस से हो जाएगा, right? So rains will be mostly coming on this side. तो कौन सा साइड बोलते हैं इसको? Sir, windward side. Windward side, right? So most of the rainfall is here, windward side. What is the other side? Leeward side. Yeah? Leeward side. Leeward side, right? Very good. So this is the leeward side. So leeward side पे generally क्योंकि moisture कम पहुंचता है, so it will get very less rainfall. So always आप देखेंगे phenomena में ऐसा होता है कि if there is a very huge mountain range, then on one side there is very heavy rainfall, on the other side there might be a total desert because it is the leeward side. ये हर जगह के लिए valid है, जहाँ पे भी आप high rainfalls देखते हैं. हिमालयास को देख लीजिए, हिमालयास के एक साइड में जो भी हमारा इंडियन पेनिनसुलर रीजन है, दैट इज वेरी मच रिसीविंग द रेनफॉल, ठीक है. अदर साइड आप देखेंगे हिमालयास के जो कि यहाँ से लेके रशिया तक लगता है, वहां पे आप देखेंगे पूरा एक कोल्ड डिजर्ट है जहां बारिश बहुत कम होती है.
ठीक है, it's very huge region which has been desertified by this huge Himalayas. ठीक है, and thankfully the winds coming from that colder region are also blocked by these Himalayas, so that's we are not getting a very chilling winters such as we are getting in other parts of the Russia and all, right? So it's a double benefit for the Indian people. Okay, further right now, the wind laden with moisture, the wind laden with or containing the moisture from the Bay of Bengal, from the Bay of Bengal strike the southern slope of Himalayas, strike the southern slope of Himalayas, causing intense rain, causing intense rain. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ. What is the place which receives highest rainfall in India? Can someone tell? Sir, Chirapunji. Cherrapunji. Okay. For some time it has been changed to Mosinaram also. ठीक है, तो वहां पे फंडामेंटल क्या है, क्यों इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है? क्योंकि वहां पे जो रिसीविंग साइड है वो एक है. ठीक है, एंड इट इज सराउंड दैट रीजन इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम थ्री साइड्स. So what happens? This wind comes and then it's trapped in a region. उसको जाने का और कहीं रास्ता है ही नहीं. तो जो चीज थोड़े वाइडर एरिया में होनी चाहिए थी वो सिमट के एक बहुत छोटे से एरिया में हो जाती है. And will you believe that area receives 1200 and almost 70 centimeters of an average rainfall round the year. It's a huge number. It's almost 6 to 7 times what in general an area in the northern region receives. ठीक है, जनरली आप देखेंगे तो आपको रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा जगह पर. मे बी सम रीजन्स आर कन्फाइंड टू 120, 140 और 160. ठीक है, पर यहाँ पे रेनफॉल इज वेरी हैवी. ठीक है, जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, इसको आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, अच्छा कोई और एग्जाम्पल भी अगर पूछे तो यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स. ये भी सेम टू सेम वही काम करते हैं बिकॉज दे आर कंपेरेटिवली लेसर इन हाइट. सो यहाँ पे रेनफॉल अच्छी खासी होती है बट लेसर एज कंपेयर टू द phenomena that is generated by the Himalayan region. Right? All right. So this is clear to everyone. So if we have no doubt around here, then we'll move on to cyclonic precipitation. Cyclonic precipitation. ठीक है, so do you know what is meant by a cyclone? साइक्लोन है क्या? Anyone knows? Simple question. What is cyclone? All right. So now, okay, there are some answers. Whirling mass of air in rotatory motion.
All right. Yes, to some extent it is true, but there are some other things which are related to it. ठीक है क्या? This is whirling mass of air, that is correct. ठीक है, पर इसमें होता क्या है कि जो लो प्रेशर है that is at the center and high pressure is outside. ये मैं साइक्लोन्स के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, यहाँ भी हाई प्रेशर होगा, यहाँ भी हाई प्रेशर होगा, एक कोई सेंट्रल रीजन होगा जहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है. ठीक है, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, वी नो दैट एनीथिंग विल रश फ्रॉम अ हाई प्रेशर रीजन टुवर्ड्स अ लो प्रेशर रीजन. ठीक है, हाई प्रेशर चारों तरफ है, तो विंड विल कम वेलिंग फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स एंड दैट क्रिएट्स अ व्हर्ल. जो उसको मोमेंट प्रोड्यूस, जो मोमेंट चाहिए वो इसी रशिंग के कारण मिलता है. चारों तरफ से हवा आ रही होती है, तो जो बीच का मास है दैट स्टार्ट्स रोटेटिंग, राइट. Exactly opposite happens in case of an anticyclone. एंटीसाइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर बीच में आ जाता है, ठीक है, एंड लो प्रेशर इज आउटसाइड. ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, एयर सेंटर से रश होके साइड्स में जाना शुरू करती है. तो अभी पता कैसे चलेगा साइक्लोन है कि एंटी साइक्लोन है? आप ट्रीज के डायरेक्शन से पता लगा सकते हैं. जो भी वर्लिंग मास ऑफ एयर होगा वहां की तरफ अगर ट्री झुक रहा है, अगर ट्री यहाँ पे है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन, तो समझ जाइए कि साइक्लोन है. एंड इफ दिस ट्री is moving towards outside that region or far away from that region, ठीक है, तो that will be an anticyclone. All right. So in general it is a whirling mass of air, something like this, but in USA you can easily see those phenomena, those whirling mass of air, the tornado thing. ठीक है, यहाँ पे इंडिया में यही चीज बहुत बड़े एरिया में हो सकती है. जो साइक्लोनिक फिनोमेना है वो बहुत ही बड़े एरिया में हो सकता है. तो जो लो प्रेशर रीजन्स में लोग हैं उन्हें पता चलेगा कि द एयर इज कमिंग फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन, दे विल एक्सपीरियंस दोज थिंग्स. ठीक है, बट हो सकता है आपको नॉट ऑलवेज यू विल सी दैट व्हर्लिंग मास ऑफ एयर कमिंग इन. ठीक है, बिकॉज द एरिया इज वेरी ह्यूज. ऑलराइट, so write down the cyclones are caused by, or the cyclonic precipitation is caused by the lifting of the air mass, the lifting of the air mass due to pressure difference, due to pressure difference, the cyclones have low pressure at the center, low pressure at the center, and the air flow horizontally, and the air flow horizontally from surrounding area, causing the air at low pressure, causing the air at low pressure region to lift to high altitude, to lift to high altitude, where it cools down, where it cools down and result in precipitation, and result in precipitation. ठीक है, तो ये this is a general phenomena what
a cyclonic precipitation does. अब देखिए, अभी यहाँ पे सिर्फ प्रेशर डिफरेंस था, ठीक है. If there is only a phenomena of the pressure difference which is responsible for the rushing of the air, then we call it a non-frontal precipitation or a non-frontal cyclonic precipitation. ठीक है. फ्रंट क्या है? Actually it's a divide line of the two airs having different temperatures. ठीक है. फ्रंट क्या है? It's a boundary line between two air masses having different temperatures. इसे हम कहते हैं फ्रंट. So if that is the case, that along with the low pressure region, low and high pressure formation of the region, if there is a air of different temperature coming in, जो obviously जो air आ रही होगी वो कहाँ से आ रही होगी? एक high pressure region से आ रही होगी, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा? एक low pressure region होगा. And along with this there is a difference of the temperature also. This air could be cold in nature and this rushing air could be cold in nature or can be hot in nature also, as compared to the air here at the low pressure region. ठीक है. So always remember, the air that rushes towards the low pressure region decides the name of the front. जैसे सपोज कीजिए अगर कोल्ड एयर आया यहां से रश होके तो हम कहते हैं इसे कोल्ड फ्रंट, ठीक है. और अगर हॉट एयर आया तो हम कहते हैं इसे नॉट हॉट, warm front. I should not use a word hot here, better we should use a word warm here because it's a relative term. ठीक है. तो अगर कोल्ड एयर रश होके आती है लो प्रेशर की तरफ तो हम कहते हैं कोल्ड फ्रंट, वार्म एयर आती है तो हम कहते हैं वार्म फ्रंट. करेक्ट. नाउ if the cold air is rushing, let's take the case of the cold air, right? So if the cold air is rushing, this is the divide line we call front. ठीक है. कौन सा फ्रंट हुआ? ये कोल्ड फ्रंट हुआ, ठीक है. कोल्ड फ्रंट हुआ. क्यों कोल्ड फ्रंट हुआ? क्योंकि कोल्ड एयर रश कर रही है, ठीक है. ऑब्वियसली द एयर हियर विल बी हैविंग अ हायर टेम्परेचर, करेक्ट. अब यहां से ये एयर आएगी, ऑब्वियसली विच एयर विल गो अप? हमेशा कौन सी एयर ऊपर जाती है? Warm air, Warm sir. air. Warm air, right? So what this cold air will do, it will dredge down this warm air and take its position. So this warm air will go up, it will cool down by attaining sufficient altitude so to have a dew point, and then the precipitation occurs, right? So ये जो story है, this is about the cold front, ठीक है. Now what happens in case of a warm front? If the warm air rushes, then obviously we'll be calling it a warm front, and here is comparatively colder air, ठीक है. Now what will happen? Which air will go up? Which air will go up? Sir, warm air. Warm air ही जाएगी, right? Always this warm air only will go up. So what it will do, because the colder air will take a lower altitude, warmer air obviously will take a higher altitude, so this will override this colder air and will go up, and then it will come down as precipitation, ठीक है. तो दोनों ही केसेस में वार्म एयर ही ऊपर जाती है, या तो कोल्ड एयर उसको ड्रेच करके ऊपर भेज दे या वार्म एयर कोल्ड एयर को ओवरराइड करके ऊपर चली जाए. दोनों ही केस में वार्म एयर ही ऊपर जाती है, ठीक है. पर जब वार्म फ्रंट्स बनते हैं तो वी हैव इंटेंस रेनफॉल्स बट ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन. कोल्ड फ्रंट्स बनते हैं तो वी हैव लॉन्गर ड्यूरेशन रेनफॉल बट विथ लो इंटेंसिटी, ठीक है. सो जस्ट राइट डाउन अबाउट द फ्रंट, गिव अ साइड हेडिंग फ्रंट. A front is a well-defined boundary
A front is a well-defined boundary between two air masses if one air mass lifts over another air mass, the precipitation is called frontal precipitation. ठीक है? Further right, the frontal precipitation can be subdivided as A, warm front, and B, cold front. Okay, change the pattern, right? The warm fronts occur when the warm air scores out previously lodged cold air mass and overrides it to move upward. The warm fronts are followed by extended period of light rains. Correct it if I have said the opposite while explanation. ठीक है? वार्म फ्रंट में क्या होता है हमेशा शॉर्टर ड्यूरेशंस होते हैं of light rains, but the area could be comparatively large in comparison to this cold front. ठीक है? Further right, the cold front occurs when a mass of cooler air dislodges the mass of warm air this type of transition is sharp and occurs in a small area right in bracket maybe 100 to 150 kilometers जब हम किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं तो obviously we are talking about the diameter of the entire area which is receiving the rainfall, right? Bracket close. With intense rain
for short period of duration. For short period of duration. Of a short duration. Okay. So this was all about it.